All right. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for such an amazing welcome. First of all, I'll just start to say how humbled I am to be invited here. And before I start with anything, I would like to tell you guys that I am in no way in a good capacity to stand over here and put advice to you while, great professors are sitting right in front of us. So while I'm going to speak to you, I am going to speak to you in capacity of you can call a senior, and it's a very nostalgic moment for me as well, and it's a very emotional moment for me as well, because just 10 years back, I was sitting in the same chairs as you guys are sitting right now, and I think it's a dream come true to stand up over here and speak to people on the other side. So yeah, I'm really emotional right now, so I might stutter, I might pause for awkward moments, so please bear with that. With that, I'm going to start with a basic understanding, because it's an orientation, and orientations are usually mostly for freshmen. Many of you have studied with me before, and I know that you guys are most of you are juniors, seniors, or many of you are also graduated right now. But in context with the freshmen, I will like to put out a couple of advices on how to navigate through LUMS, that while you're here, it's like a small world that we have created. When you will graduate, you will realize that the real world is different. But while you're here for these 4 years, make these years count and these years are really going to mean for you for the rest of your life. So in 4 साल में आप जो अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप करते हो, जो आपके पास आपको एक्सपोजर मिलता है, वो आपको लेटर ऑन लाइफ में नहीं मिलना होता. यूं समझ लें कि आप इन 4 years में अपने पास एक एनर्जी स्टॉक इकट्ठा करेंगे और इस एनर्जी को आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ कंज्यूम करेंगे, ठीक है, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए. एटलीस्ट दिस इज हाउ इट हैपेंड टू मी. Okay, so first of all, I will always talk about how in this age it's really, really important to have some sort of spark inside you. ठीक है, वो आप spark कहीं से भी ignite कर सकते हैं. Mostly वो spark ignite किया जाता है from our complexes of inability. ठीक है, आपके पास जो चीज़ नहीं है, उससे लोग दो तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं. So if you don't have something, you're either going to be complexed about it and be miserable about it, or you can use that complex, you can use that inability या insufficiency जो आपके पास नहीं है, and use that energy, जो negative energy उस time पे है, try to focus and cover it up, और आप उससे अपने आप को कुछ ना कुछ बना सकते हो. I'm speaking from a personal experience because I came from a very humble background. My mother is a teacher, and she tried to make the ends meet while we were growing up, and she tried to do as much as she could financially. ठीक है, और उसकी मुझे एक बहुत ज़्यादा वो होता था कि I really used to feel like कि हम disadvantaged हैं. आपके हर इंसान किसी ना किसी कैपेसिटी में एडवांटेज होता है और हर इंसान किसी ना किसी कैपेसिटी में डिसएडवांटेज होता है, ठीक है. सो आई फेल्ट कि आई वाज डिसएडवांटेज व्हेन आई केम टू लम्स, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट माय फ्रेंड्स, दे वुड जस्ट टेक अ कपल ऑफ क्लासेस and they would go home, they would change and come back again and play tennis or go to the sports complex. At the same time, what I had to do to make the ends meet was to teach around 5 to 6 tuitions a day to earn the amount sufficient to pay to LUMS at the end of a semester. So और उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में एक रहा कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है. And I worked really, really hard to overcome that. वो आपके अंदर वो एक spark होना चाहिए. वो spark आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत दूर तक लेके जाता है. हम recently क्या करना शुरू हो गए हैं, हम recently अपने आप को comfort zones में enter करने के लिए, at least that's what my understanding, what Gen Z is doing nowadays. We're trying to give ourselves comfort zones so deeply, ठीक है, कि उस comfort zone के चक्कर में हमने वो spark खत्म करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है. Your early 20s are not about your comfort zone. I think your early 20s should be about
a big hustle, everything should be all over the place, और आप पागलों की तरह मेहनत कर रहे होने चाहिए, ठीक है? Keep your head down. आपको आउटकम कोई नहीं नजर आ रहा होता. Honestly speaking, आपको आउटकम कोई नहीं नजर आ रहा होता. For 2.5 years, I was struggling trying to earn financially, ट्यूशनें पढ़ा के और इस तरह से, लेकिन there was no outcome while I was looking at my degree getting jeopardized, ठीक है? और इतना ज़्यादा stressful होता है, and when the stress is all there, उस टाइम पे आपने you have to learn to stand still in the storm, ठीक है? जब आंधी आई होती है, जब storm आया होता है, तो उस टाइम पे सबसे बेहतरीन strategy होती है, you just stand still. आपने इमोशनल नहीं होना, don't let the emotions come over you, just gather yourself, stand at one place, and it will pass. It's been like centuries, human beings have been through so much crisis. आप लोग तो सबसे मतलब important crisis, इतने बड़े crisis से pandemic से हम लोग निकले हैं, so everything passes. So just have a little faith in that. And my first idea for you guys is, while we are getting through LUMS, क्योंकि बहुत ज़्यादा times के ऊपर there will be enormous pressure जहाँ पे आप लोग feel करोगे कि it's getting out of hand. Trust me, it will not. Things will sort out. और मेरे बहुत सारी जगह के ऊपर मतलब मैं अगर अपने पास में देखता हूँ, तो I always talk about कि यहीं LUMS के अंदर ही there was a time जब मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, बुरी तरह से, जानवरों की तरह, गधों की तरह, कि मुझे वो दिन याद है, मैं यहाँ से एकेडमिक ब्लॉक से, इसको एकेडमिक ब्लॉक कहते थे पहले, सो एकेडमिक ब्लॉक से मैं सामने पीडीसी की तरफ जा रहा था और दोपहर 1 बजे का टाइम है और बाहर धूप थी और मुझे रोशनी नहीं पता चल रही थी, ठीक है? आई वॉज सो डन with myself, and I think that is what I count as my lowest moment of my life, ठीक है? और I just think about that day, और उस एक डे के ऊपर मैं बार बार सोचता हूँ कि बहुत सारे कितने लोग होंगे जो उस दिन के ऊपर गिव अप कर देंगे. And at that day there was just something inside me, and I decided to just shut down my emotion and just let it be, ठीक है? और this is what my advice to you guys is, to manage your stress. Sometimes the best policy is to detach yourself from the problem, be objective as much as you can, and it will pass. It will pass, inshallah. So that is one small advice that I will give to you guys. All right, so let's come to some better topics. All right, so my life has been centered for the love of maths. This is the title that I chose when I started Zainematics. This was inspired by Dr. Walter Lewin, who was a professor at MIT, and I was like a huge fan. I watched all of his courses at MIT OCW, and he wrote a book for the love of physics. So when I had a chance to open Zainematics, I was so inspired by his ideas and his devotion that I wanted to keep for the love of maths. And with maths, I understand that nature has not been really, just with all of us. Some of us are way more gifted than others, and some of us have a huge gift जो बाकी लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है? तो अब इसको कैसे लोग कैटर करते हैं, क्योंकि मुझे एक अनड्यू एडवांटेज था जिंदगी में जो मुझे लेटर ऑन, आप जाहिर है बड़े होते हो तो आप उसको रियलाइज करते हो कि आपके पास कितना ज्यादा अनड्यू एडवांटेज है, ठीक है? और मेरे पास अनड्यू एडवांटेज जो मेरा है वो क्लासिफाई अगर मैं करके आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो वो ये है कि मैं लिखा हुआ मैथ्स पढ़ सकता हूं, ठीक है? दिस माइट नॉट सीम वेरी लार्ज, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, आई कैन रीड थ्रू अ कैलकुलस बुक and understand everything. Now that is, now I understand. So there is no need to clap because I haven't done anything to earn that. It was just a gift that I had. Even though you have a gift, there comes a huge responsibility to polish it. Okay? Having a gift is just the first portion of success. You can't do much about your gift अगर आपने उसको polish नहीं किया हुआ है, ठीक है? So इन द लॉन्ग रन हमेशा कंसिस्टेंट लोग आगे आते हैं. तो इसीलिए हम देखते हैं कि सक्सेस का जो पैरामीटर जब डिफाइन होता है तो वो हमेशा लॉन्ग रन में डिफाइन होता है. यू आर नॉट कॉल्ड सक्सेसफुल अगर आप 3 दिन के लिए सक्सेसफुल हो, या 5 दिन के लिए सक्सेसफुल हो, या आप वायरल हो गए हो तो 1 साल के लिए सक्सेसफुल हो. सक्सेस का पैरामीटर इसीलिए हमेशा कंसिस्टेंसी के ऊपर रहा है, ठीक है? वो गिफ्ट के ऊपर नहीं है. सो देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव द गिफ्ट, बट
they don't make anything out of it because वो consistent नहीं होते हैं, ठीक है? So my first part of this slide is what it means to be in love with maths as a maths major. I'm not a maths major, but I was so much in love with maths that I have almost studied all the courses out there on MIT OCW, और मैंने LUMS में होते हुए Cal 1, Cal 2, Cal 3 और उसके बाद LA वगैरह सारे courses लिए हुए हैं. तो I have an understanding कि एक मैथ्स मेजर्स के लिए व्हाट इट मींस ये आपकी जिंदगी होती है. और एक मैथ्स मेजर की जिंदगी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या होता है कि मैथ्स मेजर्स तो कर रहे हो, आगे क्या करोगे? ठीक है, तो आई अश्योर यू, आई गारंटी यू not to worry about that, because as long as you guarantee कि आप 5 से 10 साल के लिए you're going to keep your head down and work really hard, I can guarantee you that this is a recipe of success. ठीक है? Unfortunately, like, you know, when I say Gen Z, I mean, like, you know, all of us, like, all of you guys who are graduating or near graduation right now, unfortunately, we have given you very bad social parameters of success. We have showed you people who have been successful after doing 2 years or 3 years of something or 1 year of something. Yes, those people are successful, but they represent a very small percentage of strata. They represent a very small percentage of successful people. You will find the majority of successful people who have been consistent and hardworking over 5 to 10 years. So those of you who are planning to do a maths major, I will ask you to just put in all the efforts for next 5 to 10 years. Five I'm saying because 5 is a short-term goal, and 10 years is basically the correct parameter that you should keep in your mind. Those of you who are near graduating, there is nearly 6 to 7 years of struggle before you become something that you're satisfied with. एक wrong parameter हमने society ने आप लोगों के सर के ऊपर रखा हुआ है. I always talk about that, and that parameter is called the 30-year benchmark. So we have somehow put a benchmark on the age limit for success. Oh, you're 24, you should be graduated. You're 26 or 27, you must be doing post-grad, or you must be at a good firm working in a corporate or something like that. And by 30, you must have your life sorted out. Okay? Please understand that life is not like basic education that we do. At the age of 3, you will be in grade 1. At the age of 17, you will be in O-levels. At age of 19, you'll be doing A-levels. At 23 or 24, you'll be graduating. Till this point, we have defined the benchmarks for you. But from here on, life is a limbo. We have to understand that life does not work linearly for everybody. ठीक है, सो हर किसी का प्रोग्रेस मार्क डिफरेंट है. बहुत सारे लोग लेटर ऑन प्रोग्रेस करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग शुरू में क्विक सक्सेस पे जाते हैं और बाद में स्टैग्नेंट हो जाते हैं. सो लेट द लाइफ फिगर आउट व्हाट इट हैज केप्ट फॉर यू इन द बॉक्स, एंड प्लीज बी पेशेंट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years. This is my advice for people who are planning to do maths majors. Now, what does it mean to be in love with maths for a normal human being who's not a maths major, who's not a math geek? So basically, how I understand is, because मैंने maths majors नहीं किया हुआ, ठीक है, मेरे लिए this was a journey about being exploring, because science और maths मेरा वो था कि मेरे पास एक hobby थी जिसको मेरा कभी छोड़ने का दिल नहीं करता था. I was in sophomore यहाँ पे doing economics and maths, and even तब तक मेरी माँ को पता था कि इस बच्चे की साइंसेस छूट गई हुई हैं, एंड ही हैज अ डीप रिग्रेट फॉर दैट. और वो मुझे सारा टाइम कहती थी कि तुम अभी भी छोड़ दो यूनिवर्सिटी और जाके किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाओ. लेकिन आई थॉट अबाउट इट, और मैंने एक बात सोची कि आपको जो चीज़ दिल से पसंद हो ना, वो आपकी छूट नहीं सकती है, आप उसको एज अ हॉबी रख सकते हो. एंड फॉर द पास्ट 12 years, I have kept maths as my hobby as well. And I started teaching maths as a career around 12 years back when I was a sophomore. And in past 12 years, there is not a single day that I felt burdened. I've overworked a lot and all of that, but मैं कभी भी overburdened नहीं हुआ. So if you are a person जिसका सिर्फ interest है, so I think YouTube is the best place for us. Take it. We go out there, so many crazy good channels, and explore yourself over there. Okay, can you? All right, so I've chatted a bit about my personal journey as well, but as a maths person, as a maths
As a teacher who conveys maths to people who do not understand maths, I will share a little bit about my journey. I was not always good with maths. When I was in grade 8 going to O-levels, I was not given add maths section. Back in our time, there used to be only 2 sections. Either you could take add maths or you could take biology with sciences. And I was not given add maths section because I fell short of 3 marks. And for those 3 marks, my mother had to go to the principal like 3-4 times. And she had to convince him to let me sit in the add maths section. And he did it on a provisional condition that if I perform well in my first exam, he will let me do that. And there comes a very influential teacher in my life. Teachers play a big part. So मेरे grade 9 के एक teacher थे. He taught me this thing. ये जो मैंने आपको आज आते ही पहली line बोली थी. He taught me this idea कि you should have a spark in yourself, चाहे वो spark आपकी inability से, insufficiency से क्यों ना generate होता हो. ठीक है? So if you create that spark in yourself, that helps you a lot. और वो मुझे इतना दुख था ना, क्योंकि मैं कॉरिडोर में बैठा हुआ था और मेरी अम्मी 3-4 दफ़ा जा रही थी प्रिंसिपल से बार बार रिक्वेस्ट करने, और वो बार बार उनको रिफ्यूज़ करके बाहर भेज देते थे. एंड आई अंडरस्टूड. उस टाइम पे एक छोटे बच्चे के ब्रेन से अगर आप सोचो तो वो इतना ग्रेव मोमेंट होता है कि आप अपने पेरेंट को इंसल्ट होता हुआ देख रहे हो. एंड दैट लाइक यू नो क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन माई ब्रेन. और उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा मैथ्स पढ़ा. आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू मी, बट मेरे 3 years एड मैथ्स की एवरेज जो थी वो 100% थी. और उसके बाद आई वेंट ऑन टू टेक NMTC and qualified for उनका screening program as well. Then I qualified for their top 20 as well. But what I'm trying to tell you, not to boast about my achievements, what I'm trying to tell you is sometimes आपका जो spark होता है वो बहुत पीछे से generate हो रहा होता है, एक बहुत basic से emotion से generate हो रहा होता है. So I'm not saying कि तुम लोग सारे यहाँ पे बैठ के सिर्फ maths पढ़ोगे, but what I'm trying to say, because I know a lot of you personally as well, and I know most of you have nothing to do with maths, you guys are just here for me. So I'm just going to tell you that one thing कि बेटा जो आपके अंदर spark generate होता है वो आपको आगे लेके जाता है. That is one small thing जिसकी वजह से आप आगे जाओगे. So if you don't have that spark, if you don't have that insufficiency in you, जिसको आपने fill करना है, you will not move forward. ठीक है? और हमारे यहाँ पे ना एक क्राइटेरिया गलत हो गया सक्सेस का. सक्सेस को लेने के लिए हम लोगों ने लेफ्ट राइट देखना शुरू कर दिया. आप जीपीए कंपेयर करते हो किसके साथ? जीपीए किसके साथ कंपेयर करते हो? साथ वालों के साथ. असल में जीपीए किसके साथ कंपेयर होना चाहिए? आपके प्रीवियस जीपीए के साथ. So the only parameter of success in life is you one day before. So as long as you're doing better than what you were one day before, you are doing fine. As long as your graph is staying upwards in long run, short run में dip कर भी जाता है, कोई मसला नहीं है. In the long run, अगर आप upwards face कर रहा है आपका graph, you are fine. चाहे वो slightly upward gradient के ऊपर है. लाजमी नहीं है कि आपने स्टीप सक्सेस के ऊपर जाना है. ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर, क्योंकि मैं एक बात हमेशा समझाता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, एंड डजंट मैटर हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, बात उसी एनालॉजी से सीखनी चाहिए. बेटे अगर आप एक 100 मीटर रेस दौड़ने लगे हो, वेयर वुड यू बी लुकिंग? वेयर वुड यू बी लुकिंग? वेयर वुड योर आईज बी? फ्रंट. कैन यू लुक लेफ्ट एंड राइट? नो वी कांट. ठीक है? सो इट्स अ वेरी बेसिक एनालॉजी. मैं ग्रेड 9-10 के बच्चों को ये बात समझाता हूँ, बट स्टिल इट्स वेरी रेलेवेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, बिकॉज जेलसी एक फैक्टर होता है. हम लेफ्ट राइट देखना शुरू हो जाते हैं. स्टॉप लुकिंग लेफ्ट एंड राइट. स्टॉप लुकिंग कौन क्या कर रहा है. स्टॉप लुकिंग किसको पब्लिकेशन मिल गई, किसको जॉब मिल गई, किसको नहीं मिली है. प्लीज लुक फॉरवर्ड एट योर ओन जर्नी. स्टॉप लुकिंग एट पीपल्स जर्नी. यू विल ऑलवेज बी डिससैटिस्फाइड. Okay, so these are like a couple of things. I'm sorry, I speak a lot. All right, so there's one, many of you must have seen this meme somewhere in life. Yeah, so another beautiful day have passed and you have not yet used Pythagoras theorem. So I've always felt this urge to address this point as well. हम ना बहुत misunderstand करते हैं maths को. हम सारा टाइम ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवा रहे हैं ये रियल लाइफ में कहाँ काम आएगी. सो मैथ्स इज नॉट अबाउट दैट. वी मिसअंडरस्टैंड व्हाट मैथ्स इज अबाउट. मैथ्स इज नॉट अबाउट दैट. आप में से कौन जिम जाता है? हाउ मेनी ऑफ यू गो जिम? जी मुझे बताएं, आपको जिंदगी में 50 किलो इकट्ठा उठाने की यूं करके कब जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी आपको. सो बेसिकली what gym tries to do to your muscles is to equip you
with enough strength and energy that अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप equipped हो, ठीक है? Similarly, maths equips you with problem solving or your mental ability to do logic. ताकि आप जिंदगी में कहीं पे जाओ, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, आप लॉजिक इंप्लाई कर सको एटलीस्ट, ठीक है? आप लॉजिकल रिलेशंस क्रिएट कर सको. सो दिस इज वन लाइक बिग मिसअंडरस्टैंडिंग दैट वी एज स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैव कि शायद हमें ये रियल लाइफ में जाके अप्लाई करनी है. बहुत कम लोग करेंगे, जो लोग बहुत नीश में जाएंगे किसी मैथ्स की, और वो भी सारा मैथ्स नहीं अप्लाई करेंगे, वो अपनी नीश ही अप्लाई कर रहे होंगे. वो सारा का सारा काम, इवन इंजीनियर्स भी जो हैं वो लोग भी सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश को ही अप्लाई कर रहे होंगे. तो पूरा मैथ्स कोई भी नहीं अप्लाई करता, पूरा मैथ्स इतना रेलेवेंट नहीं होता. रादर जो हम आपको, इट्स अ जिम फॉर योर ब्रेन बेसिकली, ठीक है? सो वी इक्विप यू विद लॉजिक, विद क्रिटिकल थिंकिंग, विद एनालिसिस स्किल्स, एंड दिस इज व्हाट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर. नेक्स्ट. ऑलराइट, so it's okay, बहुत बोरिंग बातें कर ली. Okay, let's do some stuff. Okay, so where are the cards? Under the chairs. Okay, under your chairs there is a card. We are going to do a magic trick? No, we are not. Okay. नहीं है भाई. Okay, so जिनके पास नहीं है वो गुल से मिलें. जिनके पास नहीं है वो यहाँ तो गुल से मिल लें. So we have a slide as well. तो नीचे से निकाल दो ना, कोई भी खींच दो, क्योंकि ये लोग काफी पीछे बैठे हैं. All right, so basically the card, if you have gotten the card, fine. If you haven't, you can look at the screen right now. Okay, so there are a couple of questions we're going to do, and the first 3 people to solve the first problem will get a shirt. Gul क्या देना है भाई आपने? Okay, a Zainematics shirt. So Gul had a giveaway idea. All right. So, okay, we can give more. Gul is saying हमारे पास 10 शर्टें हैं, हम ज़्यादा भी दे सकते हैं. Okay, so first 10 people to solve the first problem will get shirts. Okay, done? मैं भी इधर ही रहता हूँ यार, क्या हो गया? गुल मेरे साथ रहता है ना. Thank you यार. अच्छा जी, हाँ जी, हाँ एक ही है. चलो, all right. चल दिखा मैं solution. नहीं, पहले कभी नहीं आता. Okay, let's show the solution. अच्छा ठीक है ना, let's keep it interesting. Let's show the solution. एक सेकंड बाद में कर लेते हैं ना. बैठ जाओ. Okay, so basically the task was, it's just a basic simple logic का task. ठीक, कर लिया? यही लिखा हुआ है, पिक्चर उतार के दिखा. हाँ? अच्छा, so basically the task was कि आपके पास एक जार है 8 लीटर्स का, एक 5 लीटर्स का, एक 3 लीटर्स का, और क्योंकि इरेगुलर शेप जार्स हैं तो हम यहाँ तो either they're going to be full or not, ठीक है? तो the first idea is कि आप 8 वाले जार से, अच्छा प्रॉब्लम ये था कि आप आधा या 1 नहीं काउंट कर सकते इससे, ठीक है? सो 8 वाले से 5 वाले जार में फिल कर दें. 8 वाले में कितना रह जाएंगे? 3. अब 5 वाले से 3 वाले जार में फिल कर दें, तो 5 वाले में कितने रह जाएंगे? 2. अच्छा, अब ये 3 जो है, let's put it in the biggest jar. So this will become 6. This is 2 and this is empty now. Now shift this 2 liters to the last one, and ये वाला जो 6 liters है ये 5 वाले में shift कर दें तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है? Now this is 1, this is 5 and this is 2. अब ये 5 वाले से इधर एक shift करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, this will become 4. वो वाला 3 इधर shift कर लें तो this will become 4 as well. अच्छा, so what is the purpose of this exercise? This just helps you to think linearly, ठीक है? This is simple linear movements of things, और ये आपकी logical reasoning को strong करता है. इस तरह के problems जो है ना, हम अर्ली मैथ्स में देखा करते थे, हम 200-300 पे, ये भी कोई 200-300 ईयर्स पुरानी प्रॉब्लम है, ये कोई रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, और ये सिंपल टास्क अब हमारे जो है ना वो कैलकुलेटर्स कर देते हैं. आई एम श्योर यहाँ कोई ना कोई CS मेजर बैठा होगा जो 2 लाइन का कोड लिखेगा, सिर्फ एक लूप बनाएगा, और वो लूप जो है वो उसको आइट्रेशन के ऊपर इसको 440 के ऊपर थोड़ी देर में 2 मिनट के अंदर ले आएगा, ठीक है? सो दिस इज प्री कैलकुलेटर एंड प्री कंप्यूटर एरा, ठीक है? हमारे अभी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़े से एडवांस हो गए हैं इससे. अच्छा सुनो, अभी के प्रॉब्लम्स, सो द पर्पस हमने ये वाला प्रॉब्लम पहले किया है क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि जब पोस्ट कंप्यूटिंग एरा आया तो
the next problem is the problem that you guys are going to read now. Second problem दिखाएं. So जिस टाइम ये उस टाइम का बहुत challenging question होगा और अब नहीं है. Now we have a challenging question as well. It seems like a very easy question. हाँ. अच्छा, so basically rule ये है कि हमने basic सा एक rule develop किया कि take a number, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए. Take a number, उसके ऊपर सिर्फ 2 operations play करेंगे हम. पहला ऑपरेशन है कि अगर वो नंबर इवन हुआ तो उसको हम हाफ कर देंगे, n/2 कर देंगे, उसको x/2 कर देंगे. अगर उसका आंसर ऑड आया, अगर इवन आया तो फिर over 2 कर देंगे. अगर उसका आंसर ऑड आया तो हम उसको 3x + 1 कर देंगे. अच्छा, और अब ये जब करते जाएं, सो फॉर इंस्टेंस आई हैव 10, मैं 10 को हाफ कर देता हूँ, आंसर आता है 5. 5 इज एन ऑड नंबर. इस पे ऑपरेशन लगेगा 3x + 1 का. 3x + 1 के ऑपरेशन से आंसर आया 16. 5 × 3 15 + 1 is 16. 16 फिर हाफ होगा क्योंकि इवन नंबर है. 8 फिर हाफ होगा 4 फिर हाफ होगा 2 और 2 फिर हाफ हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 1. अब क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन एक कंजेक्चर है. कंजेक्चर वो होते हैं जो प्रूव नहीं हुए होते, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, एटलीस्ट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. हमारा टास्क ये है, हमने एक नंबर प्रिडिक्ट करना है जो इस लूप के अंदर बंद ना होता हो. लूप क्या है, ये सारे नंबर्स 1 के ऊपर आएंगे. एवरी नंबर दैट यू विल टेस्ट, कोई भी नंबर ले लेना, एक नंबर अपने ब्रेन में कर लेना, टेक अ नंबर इन योर ब्रेन और उसका लूप बंद होके किस पे आएगा, 1 के ऊपर आएगा. ओके, थिंक अबाउट इट. जी हाँ, ठीक है. अच्छा, इसके ऊपर ना $500 प्राइज मनी है इस टाइम पे. सो इफ यू प्रूव, इफ यू हैव अ डिसप्रूविंग नंबर, सो यू विल गेट $500, नॉट फ्रॉम मी, ठीक है. देयर इज एन इंस्टीट्यूट. ओके, सो आगे करना. ऑलराइट, सो बेसिकली दिस गाय इज राइट. दिस इज कॉल्ड कंजेक्चर. और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी नंबर्स हम उनको प्लॉट करते हैं वो सारे इवेंचुअली लूप होके दे लूप डाउन एंड क्लोज एट 1, ठीक है. लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये आज तक ना प्रूव हुआ है या ना डिसप्रूव हुआ है. और ये वाली जो बात है ना, आज तक हमने जितने नंबर टेस्ट किए हैं वो इसको नहीं ब्रेक करते. दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ सफिशिएंट स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है. सो आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ओ बिकॉज हमने बहुत नंबर चेक कर लिए हैं, देयर माइट स्टिल बी अ बिगर नंबर जो इसको इससे इक्वल मतलब इससे बाहर बिलोंग करता हो, इसके सबसेट से बाहर बिलोंग करता हो. सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू अर्न $500, ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम इज आउट फॉर यू. आई नो $500 से इंप्रेस नहीं हुए ना. चलो अगली स्लाइड. So for the more greedy ones of you, these are 8 problems. These, each of them have $1 million prize. ठीक है. These are 7 problems. One of them has been solved. इनमें से एक सॉल्व हो गई हुई है. और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कुछ मैथमेटिशियंस की नेचर के बारे में. एक सॉल्व होगी, गेस करो उस बंदे ने क्या किया. गेस करो उस बंदे ने क्या किया जिसने एक बंदे ने सॉल्व की. वो आया और उसने आके प्राइज मनी डिनाई कर दी. Do you know what he said? I did not do it for the money. I did it for maths. And he left. ठीक है. Okay. So this is what sort of people mathematicians are. Okay. All right. हाँ. अच्छा guys, एक मिनट के लिए रुक जाओ. Just stay for a minute. All right. So since many of you guys have studied from me, you guys know there is a ritual. हमने सारी उम्र बहुत माइलो पी हैं, ठीक है. And as a gesture of nostalgia, ठीक है, I brought Milos with myself. So on your way out, please take Milo, ठीक है. And thank you so much for coming. अच्छा. Thank you so much for coming. If you guys want to meet, do come to me and we'll take pictures. Thank you so much. Oh, gift वाला बच्चा. यार मुझे शर्ट तो दे दो. माइलो वाले माइलो उठा लेंगे, खुद ही यहाँ रखते ना. बच्चे थोड़ी. Guys, do come forward and take your Milo. Thank you so much. Thank you.